Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of grade 5, welcome in a class. Dear students, I hope you all are fine. As we are studying unit number 3, that is seed structure and germination. So let's start today's class. Dear students, in previous lecture we have discussed about the seed, that most of the plants start their life from a seed. And then we have discussed about the types of seeds. So see how many types of seeds are there. There are two types of seed. Which one? Monocotyledonous and dicotyledonous seeds. Monocotyledonous seeds are those which have only one cotyledon. For example, wheat, rice and maize. And dicotyledonous are those which have two cotyledons. For example, bean, pea and mango, etc. In today's lecture, we will discuss in detail about seed germination. So, what is seed germination? So, seed germination can be defined as the coming out of shoot and root from a seed is called seed germination. So, simply जब हम कोई भी सीड लेके उसको किसी भी जो है या फिर मड या सॉइल में हम जब बोते हैं तो उसके कुछ दिनों बाद आफ्टर सम टाइम जब ये आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा सीड जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये रूट निकलेंगी एंड देन इससे जो है वो शूट अपीयर होगी. सो दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज सीड जर्मिनेशन. सो व्हाट इज़ सीड जर्मिनेशन? द कमिंग आउट ऑफ अ शूट एंड रूट फ्रॉम अ सीड इज़ कॉल्ड सीड germination. Now students, how a seed is germinate? What is the process for seed germination? So students, most of the plants start their life from a seed. Simply वी हैव अ सीड्स. हमारे पास सबसे पहले क्या है? सीड है. ज़्यादातर प्लांट आपके पास क्या है कि ये सीड से ग्रो करते हैं. सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. कि एक ही सीड से आपके पास क्या होगा? न्यू प्लांट की ग्रोथ होती है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास स्टेजेस कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आपके पास क्या है? सीड. जब आप कुछ दिनों तक सीड को ज़मीन में बोते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि इससे छोटी सी एक जो है एक इस तरह यूँ शूट सी निकलना शुरू हो जाएगी. सो दिस इज़ नोन एज व्हाट? दिस इज़ नोन एज रेडिकल. वो पोर्शन, रेडिकल आपके पास क्या है? वो पोर्शन है सीड का जहाँ से जो है ग्रोथ स्टार्ट होगी. दिस इज़ नोन एज रेडिकल. ठीक है. और इसका ये जो अपर रीजन है दिस इज़ नोन एज व्हाट? दिस इज़ नोन एज हाइपोकोटाइल. दिस इज़ हाइपोकोटाइल. ठीक है. यानी कि हाइपो आपके पास क्या है? बिलो. यहाँ पे क्या है? ये हाइपोकोटाइल यानी कॉटिलेडन से बिल्कुल नीचे. सो हाइपोकोटाइल है. उसके बाद नेक्स्ट हम क्या कहेंगे कि उसके बाद ये जो आपके पास आउटर सी कवरिंग है सीड की, सबसे आउटर कवरिंग, एज यू नो दिस कवरिंग इज़ नोन एज सीड कोट. और जैसे ही सीड से थोड़ी सी ग्रोथ शुरू होगी तो ग्रोथ के बाद आपके पास जो सबसे पहले जो शूट निकलना शुरू होगी, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ हाइपोकोटाइल. जो शूट आपके पास निकलेगी इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल. और ये जो आपके पास सॉफ्टन पोर्शन है सीड कोट से नीचे, ये आपके पास क्या है? दिस इज़ नोन एज कॉटिलेडन. अब कॉटिलेडन से सबसे पहले आपके पास छोटे छोटे दो लीव्स निकलना शुरू हो जाएंगे. सो दीज लीव्स आर नोन एज प्राइमरी लीव्स आर फॉलिएज लीव. ठीक है. इनको हम प्राइमरी लीव भी कहते हैं. ठीक है. जो सबसे पहले क्या होते हैं? अपीयर होते हैं. सो दीज आर नोन एज प्राइमरी लीव्स आर फॉलिएज लीव्स. सो जैसे ही आपके पास एक प्लांट ग्रो करता है एक सीड से तो सबसे पहले आपके पास क्या है? इनसे रूट एंड शूट निकलना शुरू हो जाती है. ठीक है. अब रूट्स के बाद आपके पास ये क्या है? ये जो सॉफ्टन रीजन है दिस इज स्टेम. अब स्टेम आपके पास जो सबसे पहला रीजन है ये आपके पास क्या है? दिस इज़ नोन एज हाइपोकोटाइल. ठीक है. उसके बाद ये जो आपके पास पार्ट है सीड का दिस इज़ नोन एज कॉटिलेडन. एंड देन above the cotyledon it is present the part present that is called epicotyle. And then आपके पास जो primary leaves निकलते हैं these leaves are known as foliage leaves. So this whole process is the seed germination process. So students, what is the seed germination process? So we can say that the seed grows into a new plant. First the seed grow into the root. The first of all seed grow into the roots. And what is the function for roots? The function of root is to access water अंडर ग्राउंड. ये क्या करेंगे? ग्राउंड से वाटर को एक्सेस करते हैं. द नेक्स्ट वन इज शूट बिगिन्स टू अपीयर एंड दैट शूट इज नोन एज हाइपोकोटाइल. ऑन द शूट लीव्स grow. So what is the function for these leaves? These leaves get energy from the sun for the process of photosynthesis. And what is the process of photosynthesis? Photosynthesis is to prepare their own food in the presence of sunlight.
Later on, flowers will appear on the plant, and then flowers again produce seeds, and this whole process will repeat itself again. So this process is known as seed germination. So what is seed germination? Seed germination is the coming out of a shoot and root from a seed is called seed germination. Now students, there are several factors which help to grow seed. So there are majorly 5 factors which help to grow seed. So the first one is soil. So every seed needs soil to grow. कि soil के बिना कोई भी जो है seed grow नहीं करेगा. So the next one is air. Air is very necessary, and the third one is water, sunlight and proper temperature. So there are 5 factors. हमारे पास 5 factors हैं जिनकी हेल्प से एक सीड ग्रो करेगा. लेट्स सपोज अगर आप कोई भी सीड लें, उसको अगर आप बिना सॉइल के यानी किसी भी बीकर वगैरह में रखते हैं तो वो क्या ग्रो करेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज के सीड को ग्रो करने के लिए सॉइल रिक्वायर्ड होती है. उसके बाद अगर हम उसको कंप्लीट जो है डार्क मोड में, यानी कि आप जो है एक सीड को उठा के किसमें शॉपर बैग में रखते हैं तो क्या वो ग्रो करेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शॉपर बैग से इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही. सो एयर की मौजूदगी ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद वाटर, क्या बगैर पानी के कोई भी सीड ग्रो करेगा? बिल्कुल भी नहीं. सो दे रिक्वायर्ड वाटर टू ग्रो. एंड देन सनलाइट, हम कंप्लीट डार्क रूम में रखें तो तब भी आपके पास सीड ग्रो नहीं करता है. एंड देन प्रॉपर टेम्परेचर, अगर आप किसी को उठा के फ्रीज़र में रखते हैं सीड को तो या फिर बहुत ही ज़्यादा हैवी सनलाइट में रखते हैं तो क्या वो ग्रो करेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज दे नीड प्रॉपर टेम्परेचर. सो व्हाट आर द फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच हेल्प टू सीड इन ग्रोथ? There are 5 factors, that is soil, air, water, sunlight and proper temperature, which helps seed to grow. The next one is conditions necessary for germination. So there are several conditions which necessary for germination, that is soil, air, water and proper temperature. So if any one condition is missing, then seed cannot grow well. So this is all about the seed germination. So student, first of all we have discussed about the seed germination. So it is the coming out of shoot and root from a seed is called seed germination. Then we have discussed several factors which help to which help seed to grow, that is soil, air, water, sunlight and proper temperature. And then we have discussed about the conditions necessary for germination. So there are 4 conditions which are necessary for germination, so that are soil, air, water and proper temperature. Now students, move towards the exercise question and homework. So the first one question is, name environmental factors which help seed to grow. Answer for environmental factors. So there are 5 environmental factors. So first of all you have to put the heading of environmental factor and then make a flow chart. Soil, air, water, sunlight and proper temperature. So there are 5 factors which affect the seed growth. So name the environmental factor which helps seed to grow. Environmental factors: soil, air, water, sunlight and proper temperature. And the next question is, list conditions necessary for germination. So put the heading of answer, then put the heading conditions for germination. So there are 4 conditions, that is soil, air, water and temperature. So list conditions necessary for germination. Conditions for germination, that is soil, air, water and proper temperature. Now students, move to the exercise and next question, that is choose the correct answer. So the first one is, seed coat is also called. So अभी हमने पढ़ा था सीड कोट को हम क्या कह सकते हैं? टेस्टा, एंडोस्पर्म, कोटिलेडन एंड रेडिकल. So seed coat is also called testa. The next one is, cotyledon are very important because, and what is the function for cotyledon? So it provide food and nourishment for the baby plants. So where is the option? Store fertilizers, store water, store food and store air. So the correct option is store food. So function of cotyledon is to store food. The next one is, a seed kept at low temperature does not grow because of not getting. अभी हमने बात की थी कि जब आप
प्रॉपर टेम्परेचर नहीं देंगे, हाई या लो टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा. सो सीड्स रिक्वायर्ड अ प्रॉपर टेम्परेचर टू ग्रो. The next one is the process in which seed grow into a new plant is called what? Is called a seed germination. So जैसे अभी हमने पढ़ा था germination, photosynthesis, respiration and fertilization. So the correct option is seed germination. The next one is all are important for germination except इनमें से सब जो है बहुत important है, that is air, water and good soil. These are also important, but moonlight is not required for germination. So C option is correct. So the next one is the young plant present inside seed is called what? ये बेबी प्लांट या यंग प्लांट को जो हमने क्लास में डिस्कस किया था. सो दिस इज़ नोन एज टेस्टा, प्लूम्यूल, एम्ब्रियो एंड रेडिकल. सो इट इज़ नोन एज एम्ब्रियो. द यंग प्लांट इज़ नोन एज एम्ब्रियो. So student, this is all about today's lecture. So your homework is you have to write these two questions. First of all, you have to memorize these two questions very well, and then you have to write these two questions on your assignment sheets with proper paper presentation, with proper date lines and writing formation. एंड स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर कि आपने साथ साथ अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखना है, बिकॉज के फेब में आपके रिटन एग्ज़ाम होंगे, यू नो वेरी वेल. तो आपके जो रिटन एग्ज़ाम होंगे उनमें आपने होमवर्क जो सबमिट किया है ये आपने 26 जनवरी को आपने ये असाइनमेंट शीट्स पे होमवर्क करके आपने सबमिट करना है. और ये कंपलसरी है क्योंकि इसके 50% मार्क्स आपके एनुअल एग्ज़ाम में काउंट होंगे. इज़ इट क्लियर? और फेब में आपका जो रिटन एनुअल एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी आपने साथ साथ प्रिपरेशंस जारी रखनी है. एंड वन थिंग मोर स्टूडेंट्स कि आपको पता है जैसे आपके कॉलेज में एंट्री टेस्ट हो रहे हैं तो 24 जनवरी को मॉन्टेसोरी सेक्शन के लिए एंट्री टेस्ट होगा. अगर आपके कोई छोटे बहन भाई विलिंग हैं एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने ज़रूर उनको साथ साथ गाइड करना है, ठीक है. और दूसरी चीज़ कि 31 को ग्रेड 1 से ग्रेड 9 तक के एंट्री टेस्ट प्लस स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहे हैं, तो ठीक है. ग्रेड 6 से 9 तक का स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें भी अगर कोई अपीयर होना चाहता है तो आपने साथ साथ क्या करना है कि आपकी सारी बुक कवर हो चुकी है तो आपने फर्स्ट चैप्टर से एंड तक आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स प्लस जिस तरह से आपको सारा कराया गया है आपने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है. और कोई और भी एडमिशन लेना चाहे तो ग्रेड 1 से ग्रेड 9 तक के एंट्री टेस्ट के लिए आप सबने रिस्पॉन्सिबिलिटी से सबको गाइड भी करना है. इज़ इट क्लियर? ओके, अल्लाह हाफिज़.